wondered कि भाई जो सेलिब्रिटीज होते हैं, सेलिब्रिटी स्पाउसेस होते हैं, या जो हैव ऑल्स ऑफ द सोसाइटी होते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, वो क्या कहते हैं, वो क्या बातें करते हैं, आपके और मेरी तरह नॉर्मल गॉसिप करते हैं या नहीं करते हैं। एंड इफ दैट हैज बीन अ क्वेश्चन इन योर माइंड और उसकी वजह से आपने काफी गॉसिप मैगजीन्स पढ़ी हो या फिर आपने बहुत सारे सोशल मीडिया में लोगों को फॉलो किया हो, you don't look any further because Bollywood wives have given us enough nice dose of that। और अभी आया है फैबुलस वाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइव्स, तो ये करंटली मैं बिंज वॉच कर रही हूँ। एंड टुडे द ओजी वाइव्स नीलम, भावना, महीप एंड सीमा आर विद अस, तो ऑफ कोर्स वील नो फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस क्या कुछ वो और हमसे कह सकते हैं। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, a warm welcome to all four of you on Punjab Kesari Navodaya Times. Thank you. Thank you. Nice. And let me say thank you on behalf of every fan of, you know, जो questions ये सब लोगों के रहते थे कि यार ये लोग की लाइफ कैसी होती है, ये कैमरा के बाद की इनकी जिंदगी कैसे होती है। So thank you for showing us a little glimpse for all that. Okay, welcome, I guess. Okay, भाई, I'll ask with you. I'll begin my questions with you क्योंकि मैंने जो observe किया, मेरे साथ साथ शायद बहुत से लोगों ने किया होगा, कि आप बड़े मुंहफट हो और आपने admit भी किया है ये नो फिल्टर वाले पर्सन। तो ऐसे में जब आपने अब ये सीरीज जब आप शूट कर रहे थे तो अलग होगा, बट नाउ हैव यू वॉच्ड इट इन entirety first of all? Honestly, I hate watching myself. I Acha. didn't want to watch this, but I did. Yesterday, I finally finished the show. Okay. I wanted to do some homework. That's why I watched it. Otherwise, I can't bear watching myself, to tell you honestly. But Okay. it's a good show, I have to say myself. It is a good show, but मैंने ये सवाल आपसे शुरू इसलिए किया क्योंकि एक तो होता है आप लोगों की जो कॉन्वर्सेशन, जो मैंने सबसे ज्यादा नोटिस की वो थे आपके आई रोल्स। Yeah. और सबसे ज्यादा आप ही के महीप थे कि कोई दो लोग बात कर रहे हैं एंड यू नो योर आईज वुड रोल, एंड मतलब वो देखते देखते 6th एपिसोड तक तो मुझे ही पता चल गया अच्छा महीप अब शायद अंदर ऐसा सोच रही होंगी। तो वो आपने ऑब्जर्व किया कि यार बड़ा अच्छे से उन्होंने कट किया हमेशा आपके फेस पे। Honestly, what my biggest problem is that it shows on my face. I cannot hide it. So I'm thinking the cameras weren't on me and they were there, and I was just like, what is she talking about? You know, so I think it was showing on my face, and yeah, they edited it beautifully and they put it out there, so I had a lot of expressions that I didn't realize I was doing. But now that you've seen it, आपको realize होता है। सीमा, आपने देखा शो कंप्लीट जी। अभी फुल? अच्छा, Yeah. तो did it turn out exactly जैसा आपने सोचा होगा, या आपको ऐसा लगा कोई अनएक्सपेक्टेड चीज भी हुई जब आपने अब उसे देखा? बिकॉज हर जगह तो आप नहीं थे हर बार, लेकिन अब जब आप शो को देखते हो तो उन्होंने क्या क्या डाला है, क्या नहीं डाला है, कुछ एक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स भी दिखे आपको? No expected turns. In fact, I felt कि वो क्यों नहीं डाला, वो क्यों नहीं डाला. That was more my reaction, because there was so much more that happened in a scene के you know बहुत सारा they cut out a lot of stuff. So I think my thought process went there, but yeah, it turned out really well. It has. And Bhavna, my question to you is कि you know जब हम कोई चीज देख रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि you know ये तो सेलिब्रिटीज हैं, या ये you know you're used to कि कैमरा हमेशा आपके सामने होगा, वरना दिस ऑल्सो इज अ रियलिटी शो। बट फिर भी कहीं बैक ऑफ द माइंड तो आपको पता है ना कि अगर हम दो फ्रेंड्स भी बात कर रहे हैं, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते अभी उसे पता चले, बट कैमरा तो है, तो कहीं वो रहता था कि यार ये मतलब ये उतना ऑनेस्ट में नहीं बोल पा रही हूँ, या यू वर प्रीटी ऑनेस्ट एवरी टाइम? यू नो द थिंग इज कि जब भी उन्होंने एक सीन शूट किया है तो वो सीन हमेशा उस सीन को शूट करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, और तुम 3 से 4 घंटे तक प्रिटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि 5 मिनट प्रिटेंड कर लो, 10 मिनट प्रिटेंड कर लो, सीन वार्म अप करने में भी टाइम लगता है, बिकॉज जब तुम कॉन्वर्सेशन शुरू होती है जब, यू आर ऑलवेज अ लिटिल कॉन्शियस, बट एज द सीन प्रोग्रेसेस यू स्टार्ट ओपनिंग अप। जो महीप ने कहा कि थोड़े टाइम बाद लगता है कैमरा तुम्हारे ऊपर नहीं है, एंड वो मोमेंट एक्चुअली हैट्स ऑफ टू द शो डायरेक्टर, एडिटर्स एंड द होल टीम, क्योंकि वो उस मोमेंट की वेट करते हैं कि व्हेन वी लेट अ लिटिल लूज, और जब हम एक्चुअली बातें करना शुरू करते हैं, और ये शो जेन्युइनली एडिटेबल पे बनता है। और फिर ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा मजेदार, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, जो सबसे ज्यादा रियल मोमेंट्स हैं, दे पिक दोज अप और वो फाइनल एडिट में जाता है। So you can't pretend much, how much ever you want to.
राइट अच्छा कई कई जगह ऐसा भी मैंने देखा देयर वर सम टाइम्स जहां पे बहुत ही इंस्टेंटली आप साथ के साथ का कौन चार तो आप शुरू से ही जेल करते हो वीव गॉटन यूज्ड टू इट फ्रॉम द टू प्रीवियस सीजंस यहाँ पे सात लोग जब साथ बैठे हैं तो ऐसा लग रहा था कि यार अभी who's going to break the ice ये बोल क्यों नहीं रहे हैं या अरे टॉपिक नहीं मिला है तो नीलम ऐसे में who was breaking the ice more often और या आपको टॉपिक दिए जा रहे थे कि चलो नहीं आपको लोग को समझ आ रहा है आप इस पे बात कर लो क्या होता था Look, I have to be very honest. In the beginning, when there were scenes of हम साथों के साथ, बहुत मुश्किल था. I think all four of us were finding it a little difficult because, first of all, we know of them. We've been socially acquainted, but not friends. So when you're not friends, it's difficult to sort of start a conversation going or kya baatein kare, and also in the beginning we were also very careful not to say anything to maybe offend them, because it's a new format for them also. Four of us are seasoned and we understand, if someone's pulling someone's leg, and it's fine, but with the the new three ladies, we were a little tentative in the beginning, and then we warmed up to them and we got used to, it became easier having conversations with them. Right, but Maheep, were you prepared for this kind of तड़का जो add हुआ है इन तीनों के आने से? No, I wasn't prepared because you're never sure how they're going to react, how they're going to be on screen. Like Neelam said, we met them the first time on screen. I've known Ridhima, I've known Shalini socially, but when we were together, it was the first time we were in a scene together. We don't know how they're going to react. See, I'm used to them. We've done now 3 seasons together. We know each other's pulse. We know what ticks each other off. I just gauge. I just know them so well now. It was unsure. It was, new territory for me. So, but it worked. The show is rocking, and it's really also thanks to them. They added a lot to the show. So, yeah, I mean, kudos to them, and I'm very happy. राइट एंड वन थिंग जो हमेशा एक टॉपिक कहीं ना कहीं रहता था इस दिल्ली वर्सेस मुंबई और ये बहुत मतलब जो भी इंसान दिल्ली में या बॉम्बे में काम करता है उनके बीच का ये रहता ही है भावना क्योंकि आपका दिल्ली कनेक्ट भी है ही और अब आप दिस ओजी मुंबई लेडी तो आपके लिए कई बार ऐसा होता था कि यार इतने भी बुरे नहीं है नहीं यार दिल्ली में ऐसा अच्छा होता है ऐसा कभी होता था कि आपकी इन तीनों से कभी एक बहस हो जाती थी कि यार नहीं दिल्ली है इस मामले में अच्छा है एक्चुअली मैंने अपनी कॉलेज लाइफ दिल्ली में बिताई है एंड आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन दिल्ली मेरी फैमिली भी दिल्ली में रहती है तो आई एम वेरी यूज्ड टू दिल्ली दैट वे आई डोंट थिंक हम तीनों की कोई बहस हुई दिल्ली बॉम्बे के बारे में शुरू में शो शुरू होने से पहले आई हैड थॉट कि मैं दिल्ली वालों से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होंगी दैट वाज माय थॉट बट देन एज द शो प्रोग्रेस्ड और जैसे हमने सीन्स शूट किए आई रियलाइज कि अब इस उम्र में जो मेरी ये अपनी क्लोज फ्रेंड्स है महीप सीमा और नीलम उनके साथ जितना मेरा कंफर्ट लेवल है वो बहुत मुश्किल है किसी नए इंसान के साथ बनाने के लिए आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट फ्रेंड्स और इट्स जस्ट दैट द कंफर्ट आई शेयर विद द फोर ऑफ अस वो करना नाउ मैं 50 साल की हो गई हूँ बहुत मुश्किल है करना बहुत मुश्किल है इस एज में एंड इन ऑल ऑनेस्टी वो कंफर्ट 2 सीजन्स में आपने हमें ऑडियंस को दे दिया है तो ना हमारे लिए भी थोड़ा सा वो हो रहा था कि हम भी ना कहीं द बैक ऑफ माइंड बायस्ड होके कह रहे थे ये एक्सेस बैगेज वाली जो बातें चल रही थी बट वेरी क्विकली वन लास्ट क्वेश्चन विच इज एड्रेस टू ऑल फोर ऑफ यू हमारे लिए एज ऑडियंस बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हमें अच्छे लगे एंड आई वाज लाफिंग एट सम थिंग्स एंड जैसे मैंने कहा वही आई रोल मैंने हर बार नोटिस किया कि वो उनके चेहरे पे दिख जाता था कि अब क्या बोल दिया इसने टाइप्स लेकिन अगर मैं ये आप चारों से पूछूं टॉप ऑफ योर हेड राइट नाउ सबसे मेमोरेबल पार्ट ऑफ दिस सीजन क्या रहा सीमा आई विल स्टार्ट विद यू I think Mauritius. Quite frankly, Mauritius for me was memorable, and although मैंने देखी नहीं when Shalini went running into the ocean, मैंने देखी नहीं Maheep and I were I think we were doing a scene somewhere else या कहीं और गए थे. I had major FOMO, and I remember coming back and I was like, why did I miss this? So I think that whole that day was quite interesting.
Okay, Neelam? I think there's so many instances, especially on the holiday, that come to mind. But I think what Seema is saying, I agree, because it was so spontaneous. Bhavana and me were we just happened to be sipping coffee in the morning, and all of a sudden we saw Shalini run in the rain into the sea. So I think for that, all of a sudden that happening, I mean, we were really taken aback, and I think it's looking quite funny on screen. It is दो छतरी लेके आप दोनों ऐसे देख रहे हैं उनको और फिर भाग रहे हैं कि अरे इसने तो नहीं हमें देख लिया, कि मतलब कोई हमने ऐसी चीज देख ली जो देखनी I नहीं mean, चाहिए we थी. didn't even have makeup on. Our hair was just tied up. We had just woken up. So, for me, yeah, that was the scene. Bhavna, what about you? I think वही सीन मेरे लिए तो it was a more special because as नीलम said, ना हमने मेकअप किया हुआ था, ना हमने बाल बनाए थे, हम दोनों अपनी एक्चुअली सुबह की चाय पी रहे थे और हमने सडनली विला के बाहर देखा कि कुछ आवाजें चल रही हैं, तो हम बाहर गए देखने के लिए कि हो क्या रहा है, क्योंकि हमें बोला गया था कि आज शूट नहीं हो रही क्योंकि बारिश हो रही है, आज शूट नहीं हो रही, अभी थोड़े घंटे नहीं होगी, तो हम तो ऐसे ही बैठे हुए थे. फिर एकदम से शालिनी पानी की तरफ भाग रही थी पूरी अपनी फुल ड्रेस पहन के, तो वी कुडंट कंट्रोल आवर इमोशंस. बट हैविंग सेड दैट, मैंने एक चीज इस बार रियलाइज की है कि ये शो बहुत टीम एफर्ट है. अगर शालिनी के सीन्स फनी लगे लोगों को, वो इसलिए फनी लगे क्योंकि हमारे रिएक्शन भी बहुत ओवर द टॉप थे. कोई भी सीन without all seven complete नहीं होता. You can be the best person, you can be the funniest person, you can be the most intelligent person. अगर reaction ना मिले तो वो scene flat हो जाता है. So that's the thing I realized इस season में. Correct. Maheep, what will you add? Honestly, I take back the whole season. It's bloody memorable for me. Right up from us going in Delhi, behind the scenes also, us meeting every night in utter confusion because the Delhi girls were bought in to us. Right up to Mauritius, right up to, everything has honestly been quite memorable. I can't pinpoint one thing at all, but I love the scenes the most with four of us because, again, that's my comfort zone, and I think I'm most myself there. But having said that, everything, and I'll say about the first and the second season also, there's no one point for me, not one scene for me. It was the whole thing. Every scene I can talk about some discussion that Neelam, me, Bhavana had behind the scenes, or some incident behind the scenes that is quite memorable. राइट एंड आई थिंक ये जो पैशन आप लोगों का है इज द रीजन कि हम थर्ड सीजन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके सक्सेस की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हैविंग विटनेस्ड द सक्सेस ऑफ द प्रीवियस वंस एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी मोर सीजंस. सो मे दी ओजीज हैव मेनी मोर एक्सपीरियंस विद, आई डोंट नो अभी सीजन 4 में क्या आप लोग प्लान करोगे, बट हंसाते रहिए, हमें एंटरटेन करते रहिए और बिना गॉसिप मैगजीन खरीदे हुए हमें अंदर की वो गॉसिप आप लोगों के जरिए मिल रही है. सो थैंक यू सो मच एज अ फैन फ्रॉम माय साइड एंड wishing you all the love and luck for everything that you do in future. Thank you. Thank you.